Hello, assalamu alaikum, dear students. So I am with a new topic here, ठीक है ना बेटा, particularly for NEET students and for those students who are in the class 12, जिन्होंने class 11 थोड़ा सा पढ़ा है बेटा, ठीक है ना बेटा. So we are starting a new unit and that is gravitation. Okay, so concentrate on this. Most probably we will be completing this gravitation in 3 or 4 lectures, ठीक है ना बेटा. Okay, so concentrate here. Okay, so first of all, the topic number first is that without wasting any time, let's start with this Newton's law of gravitation. All right, तो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, Newton's law of gravitation. Okay, so first of all let me explain it to you, Newton's law of gravitation. ठीक है ना बेटा. Okay, so what is Newton's law of gravitation is, first of all, point number 1 here it is that this Newton's law of gravitation gives what? It gives gravitational force between 2 point masses at rest. Okay, so here we have, these are 2 point masses, this mass is m1 and this is another particle, its mass is m2. Now these two particles, they attract each other by a force that's equal to F. All right, that's equal to F. Okay, then this F is equal to the value of this F, it depends upon 2 parameters. It depends upon how many parameters? Exactly, it depends upon 2 parameters. Okay, all right, so F depends upon number 1, it is directly proportional to the product of the masses m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance. Then what we have is this F is equal to G multiplied by m1 into m2 divided by r square. Okay, all right, I am not going to explain what this what this means, that F is proportional 1 by r square, and what this means F is proportional m1 by m2. You already know it, ठीक है ना बेटा. So then the important point is that this G, okay, a small discussion on this G, ठीक है ना बेटा. What's the value of this G? What's the SI unit of this G? What about the dimensional formula of the G? Okay, so first of all let me tell you that this G, its value is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square. Its value is 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, so unit is simply what? Newton meter square per kg square. ठीक है ना बेटा. Then what about the dimensional formula? Okay, so let's calculate the dimensional formula of the G. Let's calculate dimensional formula of the G. You know this is Newton, which is force. तो इसका dimensional formula है बेटा m1 L1 t minus 2. Okay, then here it's meter square, so it will be L2. Then here it's mass, so it's m minus 2. All right, then it's like this, m1 m minus 1 minus 2, so it will be m minus 1. Then here it will be L3. Then here it will be t minus 2. Okay, so this is the dimensional formula of this G. Okay, so आपसे पूछा जाएगा, for example, what is the dimensional formula of G? So obviously you can calculate it. That's its dimensional formula is simply m minus 1 L3 t minus 2. ठीक है ना बेटा. And what about the unit? That's 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay, all right. Okay, so let's straight away do the examples on this. Okay, so let's switch the examples on the Newton's law of gravitation. तो हमारे पास बेटा ये नया टॉपिक है बेटा, examples on Newton's law of gravitation. Okay, so let's work out these examples. Okay, you concentrate on this, how to do these examples. Fine. अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. So what we are going to do is that we are going to do some standard quickly. We are going to do some standard examples on the Newton's law of gravitation. Okay, so let's start with the question number 1. Okay, so question number 1 is simply like this. For example, here we have two particles. Its mass is equal to capital M. Then here we have another particle, its mass is equal to capital M. The separation between them is equal to R. All right, separation between them is equal to R. It's given to you. ठीक. Okay, they attract each other by a force of F. ठीक है ना बेटा. Can you calculate the value of F? Yes, of course we can calculate the value of F. So what is the value of F? F is simply equal to G multiplied by M into M is M square divided by R square. Okay, now the question is like this. या अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. So the question is like this. Okay, so question हमारे पास ये है बेटा that 25% of mass, 25%, ठीक है बेटा, or 50% of mass. We are doing two questions at a time. 25% or 50% of mass is transferred from M is transferred from A to B. ठीक है ना बेटा, it's taken from A to B. So 25% of the mass is taken from A to B, or 50% of the mass is transferred from A to B. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, is transferred from A to B. All right, transferred from A to B. Okay, A to B. So it's transferred from A to
B. And what we are supposed to calculate is simply what you have to calculate is that आपको नया force निकालना बेटा. What is the new force between this A and B? Okay. तो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. So 25% का मतलब क्या है बेटा? 25% simply implies that this 25% implies that 1 by 4. This 50% implies that 1 by 2. एक सेकंड में आपको आंसर चाहिए बेटा. तो ये करने का बेटा 1 minus 1 by 4 because 1 by 4 is subtracted from 1 and multiplied by 1 plus 1 by 4. All right. 1 minus 1 by 4 into 1 plus 1 by 4. 1 minus 1 by 4 किसके बराबर होता है? 3 by 4 के बराबर. 1 plus 1 by 4 किसके बराबर होता है? 5 divided by 4. 5 3s are 15, 4 4s are 16. तो इसका आंसर है बेटा 15f divided by 16. 15f divided by 16. ठीक है ना बेटा? इसी तरह से so this was your part A. This was your part A. You want to do part B. What is 50% equal to 1 by 2? So simply it will be like this. 1 minus 1 by 2. ठीक है ना बेटा? Multiplied by 1 plus 1 by 2. All right. So 1 minus 1 by 2 is equal to 1 by 2. 1 plus 1 by 2 is equal to 3 by 2. 3 by 2. So 3 1s are 3, 2 2s are 4. तो क्या आएगा बेटा? 3 by 4f. Okay. So this is your answer. Okay. So simply this is your answer. ठीक है ना बेटा? So here I will write it down. This is equal to 3f by 4. All right. Okay. So what's your answer? Answer आपके पास ये है बेटा. So one answer is this 15f by 16. Another answer is 3f by 4. All right. So we are done with this question. ठीक है ना बेटा? Okay. Next question. Let's switch to another question. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. Next question is like this. Next question is like this. Question number 2. Question number 2 बेटा आपके पास ये है बेटा. Question number 2 is simply like this. For example, this is a particle of mass m. This is a particle of mass m. ठीक है ना बेटा? This is a particle of mass m. Now it's divided into how many fragments? It is divided into 2 parts. ठीक है बेटा? Okay. So इसका mass है बेटा for example small m. इसका mass है बेटा capital M minus small m. Capital M minus small m. Now they attract each other by a force of F. By a force of F. ठीक है ना बेटा? तो आपके पास क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन is like this. Calculate the ratio of the small m and capital M so that the force is maximum. Okay, so that means you are supposed to calculate what is this ratio. Small m is to capital M is equal to what? So that the force F is equal to maximum. F is equal to maximum. ठीक है ना बेटा? इसके लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा और you will have to memorize just one point and that's like this. The force between these two masses will be maximum. It will be maximum when this capital M is divided into 2 equal fragments. ठीक है ना बेटा? तो उसका मतलब क्या है बेटा? उसका मतलब सीधे सीधे ये है बेटा. This is capital M. So that means this must be m by 2. इसका मास कितना होना चाहिए बेटा? m by 2. इसका मास कितना होना चाहिए बेटा? m by 2. So for example this is 10 kg. So for the force to be maximum ये होना चाहिए 5 किलोग्राम और ये भी होना चाहिए 5 किलोग्राम. ठीक है ना बेटा? So that means अगर आपको निकालना है बेटा small m is to capital M तो आंसर है बेटा आपके पास 1 is to 2. That's it. The problem is done. ठीक है बेटा? Small m is to capital M is equal to 1 is to 2. So this is equal to 1 is to 2. So this for example this is 2, then this is 1, this is 1. So the ratio between these two is equal to 1 is to 2. Ratio between this and this capital M is to small m अगर आपको निकालना है बेटा so that's obviously equal to what? That's equal to 2 is to 1. ठीक है ना बेटा? 2 is to 1. You want to calculate what? Small m is to capital M minus small m. You want to calculate this ratio, obviously it will be equal to 1 is to 1. ठीक है बेटा? Okay, so this was your question number 2. Let's switch to another question. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. Okay, another question जो है ना बेटा वो conceptual है. Question number 3. That's a conceptual question. वो question ये है बेटा. That is gravitational force is medium independent. What is that? Gravitational force is medium independent. What does that mean? That simply implies that if for example we have two masses, they are separated by the vacuum or they are separated by any other material medium, the force is not going to change, the force will remain unchanged. ठीक है ना बेटा? ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा बेटा? फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू पार्टिकल्स. तो ये आपके पास एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है. मास इज m1, मास इज m2. ठीक है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम. or for example they are separated by air. Now the force here is F1 that's equal to F. ठीक है ना बेटा? Now they are separated by any other material medium. What will be the force? तो उसका आंसर है बेटा F. The force will remain same because it is medium independent. ठीक है बेटा? Now for example it's separated by the vacuum. A part is vacuum and B part they are separated by any other material medium. Like they are separated by the water, like they are separated by any plastic substance, like they are separated by rubber. ठीक है ना बेटा? The force here, what about the force here? यहाँ पर force क्या है बेटा? F है बेटा. और यहाँ पर क्या है बेटा? Force will remain same. That's not going to change. The force will stay same. Okay, so this is a conceptual question. एक बार AIPMT में आया बेटा. For example, there are two massive particles. If they attract each other by a force of capital F, now they are separated by some material medium whose specific gravity is 3. That is to create the confusion.
specific gravity of a material medium is given, that is 3. What will be the new force? तो उसका आंसर है बेटा F. The reason is that gravitational force is medium independent. ठीक है ना बेटा? So I'm sure आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा. ओके ठीक. So next अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. ओके so we are done with the example number first, example number 2 and example. Later on we will do the PYQs. Okay, the previous year questions. ठीक है ना बेटा? So we'll be doing that later on. Okay. So let's switch to another question here. यहाँ आप ध्यान दीजिए बेटा. आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा. ओके. So we are done with this example is ठीक है ना बेटा. Now there are properties. Okay. So quickly I'm going to explain these properties. ठीक है ना बेटा. Okay. So property number first is that gravitational force is the weakest force in nature. Property number first is that gravitational force is the weakest force in nature. Okay. So this one we are done with this. Okay. The next is that gravitational force always attractive in nature. You know that. Electrostatic force can be attractive as well as repulsive, but the gravitational force always attractive in nature. Property number third, gravitational force is medium independent. Okay, so highly important. This is medium independent. ठीक है ना बेटा? So this one is medium independent. Gravitational force medium independent. Medium independent simply implies that if there are two massive particles, they are separated by vacuum or they are separated by any other material medium, the force will remain same. The force is going to stay same. The property number 4 here, gravitational force is central in nature. ठीक है ना बेटा? What central implies this? Most of the students know it, I think. For example, these are two particles. So this is particle 1, this is particle 2. This is the line that is joining the centers of the two masses. ठीक है ना बेटा? तो कितने फोर्स होंगे बेटा? वहां पर 2 फोर्स होंगे. एक फोर्स इस दिशा में होगा बेटा, दूसरा फोर्स इस दिशा में होगा. ठीक है ना बेटा? Now these two forces are what? They are central. Central means that they act along the line joining the centers of the two masses. Okay. The next is this gravitational force is conservative in nature. Okay. Conservative, we'll be discussing it later on जब हम potential और potential energy की बात करेंगे बेटा. ठीक है ना बेटा? Okay. Next is this property number 6 is gravitational force obeys Newton's third law of motion. It obeys Newton's third law of motion. Okay. Newton's third law of motion implies that to every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है बेटा? So simply here we have two particles. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. These are two particles. Okay. So these are two particles. Now how many forces are there? 2 forces बेटा. For example, this here F1, this here F2. ठीक है बेटा? F1 is the force on the particle 1, F2 is the force on the second particle. जो ये दो force है ना बेटा, their magnitude will be same, the direction will be opposite. तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, mathematically we can write it like this, that is F1 vector is equal to minus times F2 vector. Okay? So that means their magnitude is same, but the direction is opposite. So these two forces form action reaction pair. Now the property number 7. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. Property number 7 is like this. Gravitational force between any 2 point charges is independent of presence or absence of other masses. ठीक है ना बेटा? You know this as well. Property number 8. Property number 8 हमारे पास ये है बेटा. Gravitational force obeys principle of superposition. We'll be discussing it later on separately. Gravitational force obeys inverse square law. So what does this mean? This simply means that F is proportional to 1 divided by R square. F is proportional 1 divided by R square. ठीक है ना बेटा? The range of gravitational force is infinite. So that means range is infinite. So range is infinite. ठीक है ना बेटा? Range is infinite simply means that, for example, there is Earth and there is Sun. They are billions of kilometers. There's a huge separation between the Earth and the Sun, but still they attract each other by gravitational force. Okay, so that means the range is infinite. All right. So we are done with what? Finally, we are done with the properties. ठीक है ना बेटा? तो क्विकली हमने इसलिए पढ़ा बेटा बिकॉज दैट्स नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाईली इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपके पास है बेटा. ठीक. ओके. सो यू सी द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो पहले आप स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ लो बेटा. नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस कैलकुलेटेड इंडिपेंडेंटली. ओके. ठीक है ना बेटा? सिंपली व्हाट डज इट मीन? आई विल एक्सप्लेन इट अ बिट. यहां ध्यान दीजिए बेटा. फॉर एग्जांपल दिस इज one particle m0, this is a particle m0. ठीक है ना बेटा? and in the vicinity there are a few particles like this is m1, ये हमारे पास है बेटा m2, and this one is here for example m3, और ये है बेटा हमारे पास m4. ठीक है ना बेटा? now the question is simply like this, calculate the net gravitational force on the m0. ठीक है ना बेटा? so how to calculate it? Calculate gravitational force on m0 because of m1 independently, individually. Calculate the force on m0 because of m2. Calculate the force on m0 because of m3, so on and so forth using Newton's law of gravitation. Then once you are done with that, calculate that net vector sum of all the forces to calculate the net force on that particle. ठीक है ना बेटा? I am not going to derive here the mathematical equation because that's important only for the class 11 students. हम यहाँ पे NEET students की बात करते हैं बेटा. So I am going to quickly switch to the problems. ठीक है ना बेटा? Okay, so next. So next it is like this. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. Next it is like this. So examples on the principle of superposition. ठीक है ना बेटा? Okay. So few topics here. Number 1, a bit of factors here.
then the polygon type problems, ठीक है ना बेटा, then the symmetry type problems, then the equilibrium type problems, and then the series type problems, ठीक है ना बेटा. जो ये examples है ना बेटा, ये examples they are repeated 4 times. Number 1, twice in the gravitation, in gravitational force, in gravitational field, then twice in the electrostatics as well, in electrostatic force and in the electrostatic field, ठीक है ना बेटा. Okay, the procedure is nearly same. Okay, so let's switch to that. So let's try to do these problems. Let's try to do these questions, ठीक है ना बेटा. So quickly हम ये कर लेंगे बेटा, then thereafter we'll be switching to the PYQs, that is previous year questions. All right, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए बेटा. So let's do some questions on this. Okay, तो यहाँ ध्यान रखो बेटा, concentrate here. Okay, superposition principle. But before superposition principle, there is an important topic here, ठीक है ना बेटा. Vectors, थोड़ा सा vectors है बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. So here we have, for example, these are two vectors. For example, the vectors here are forces F and F, ठीक है बेटा. So this is F and this is F, and the angle between them is theta, ठीक है बेटा. इन दो का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, इन दो का रिजल्टेंट वो इस दिशा में आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस F cos of theta by 2. आपको याद रखना है बेटा ये रिजल्ट, ठीक है ना बेटा. वी नो नॉट डेराइव दिस रिजल्ट. So there are two vectors F and F at an angle of theta. The resultant of these two will be equal to twice F cos theta. Okay, and that will be along the angle bisector. Number 1, resultant number 1, ठीक है ना बेटा. Resultant number 2, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. For example, there are two vectors. कितने vectors हैं बेटा हमारे पास? 2 vectors हैं. For example, this here F and this here F in the same direction. Obviously, they will add. When they will add, so what will be the net here? That will be simply equal to twice. Okay, so these are two forces F and F, they are parallel to each other, so their resultant will be obviously equal to twice F, ठीक है ना बेटा. Now for example number 3 is like this. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, these are two vectors again F and F, they are anti-parallel. This is F. Obviously their resultant will be equal to 0. तो जो यहाँ पर नेट फोर्स होगा बेटा वो कितना होगा? That will be simply equal to 0. Okay, ठीक है ना बेटा. So the net force here, that will be equal to 0. So here let me write it down that the net force here F will be simply equal to 0. Number 4 is like this. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, this is highly important. If there are two vectors like this, so here we have they are mutually perpendicular. F and F. तो इन दो का रिजल्टेंट कितना होगा बेटा? That will be equal to root 2F. इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा? root 2F. Okay. Then here we have one more example, number 5. For example, here we have two vectors like this and like this. This is F and this is F, ठीक है ना बेटा. This is F, and the angle between them is 60 degree. तो इन दो का रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा? That will be equal to root 3F along the angle bisector. Root 3F along the angle bisector. Number 6 is like this. For example, there are two forces like this and like this. तो बेटा ये हैं F आपके पास, ठीक है ना बेटा, and this is also equal to F and the angle between them is equal to 120 degree. तो जो इनका रिजल्टेंट है ना बेटा, वो रिजल्टेंट कितना है बेटा? दैट्स इक्वल टू F. तो इनका रिजल्टेंट है बेटा F. समझ में आया बेटा? ओके, तो आपको याद क्या रखना है बेटा? नंबर 1 इज दैट इफ देयर आर टू फोर्सेस F and F at an angle of theta, their resultant will be equal to twice F cos theta by 2. If the angle is equal to 90 degree, root 2F, 60 degree, root 3F, 120 degree F, ठीक है ना बेटा. And these two are obvious. If they are parallel, so twice F. If they are anti-parallel, that's equal to 0. ठीक है ना बेटा. These are some important results. So you must memorize these important results. Okay. So next, अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. Next क्या बेटा हमारे पास? So next what we'll be going to do is that we'll be doing some examples on the superposition principle. All right. Okay. So example number 1. Let's do a few examples. Example question number 1 जो हमारे पास बेटा ये है. That's like this. So first of all, the examples are polygon type. They are polygon type. ठीक है ना बेटा. तो so here I will write down the polygon type examples. Polygon type examples. Okay. So first is what? Polygon type examples. That's like this. For example, here we have this an equilateral triangle. ठीक है बेटा. Each side of this equilateral triangle is A and A. Okay. इसका मास है बेटा M, इसका मास है बेटा M और इसका मास है बेटा M. ठीक है ना बेटा. Now the question is like this. Calculate the force on any of the particles. 3 particles हमारे पास है बेटा. So you are supposed to calculate the force on one particle. ठीक है बेटा. For example, this is here A and this one is B and this one is C. So question आपके पास ये है बेटा, आपको निकालना है बेटा FB. That means the force on the particle B. ठीक है बेटा. Simply आपको करना क्या है बेटा? आपको देखना है जो ये particle B है, how many pairs it makes or how many forces are there on this particle. Obviously there are how many forces? कितने force हैं बेटा इस पर? 2 forces. ठीक है ना बेटा. एक force है बेटा इस दिशा में, that's equal to F. One more force is along this direction, that's equal to F. What is the angle between them? 60 degree. जब angle 60, तब resultant कितना आएगा बेटा? तब resultant इस दिशा में आएगा. कितना आएगा? root 3 multiplied by F. Okay. So the net force on the B will be simply what? That will be equal to root 3 multiplied by F. ठीक है बेटा. So that will be equal to root 3 multiplied by F के बदले क्या लिखेंगे बेटा?
F के बदले लिखेंगे बेटा gm स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर. ओके ठीक है बेटा. सो वी आर डन विद दिस एग्जांपल. ओके ऑल राइट. देन इन द सेम वे देयर इज अनदर एग्जांपल एज वेल. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. सो हियर वी हैव दिस आवर अनदर एग्जांपल लाइक दिस. इट इज इट्स मास इज m, its mass is m, its mass is m. This is here a, this is here b, and this is here c. This is our question number 2. ठीक है ना बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, अगेन वी आर सपोज टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल b. सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट fb. क्या निकालना है बेटा आपको? fb, दैट मीन द फोर्स ऑन द पार्टिकल b आपको निकालना है बेटा. सो पहले आप देख लीजिए बेटा, हाउ मेनी फोर्स आर देयर ऑन दिस पार्टिकल b. So there are how many forces? There are two forces. Okay. So one force is along this direction, attractive in nature, F है बेटा. दूसरा फोर्स इस दिशा में है बेटा, that's equal to F. What is the angle between F and F? 90 डिग्री. जब एंगल 90 होगा तब फोर्स क्या होगा बेटा? That will be equal to √2F. तो इस दिशा में रिजल्टेंट आएगा बेटा. तो इस दिशा में रिजल्टेंट आएगा, I say that will be equal to √2 multiplied by F. ठीक है बेटा. So the net force on the particle B, what will be that B? For net force on the particle B is simply equal to what? That's equal to √2 multiplied by F, where F is the force between this and this. So that's equal to √2 multiplied by G into M is M square divided by distance square, that's equal to A square. मान लेते हैं बेटा, this is A, this is A. हो गया बेटा. ठीक है ना बेटा. √2 because the angle is 90 degree. So when the angle is 90 degree, so the force will be equal to simply √2 multiplied by GM square divided by A square. Okay. All right. नेक्स्ट और एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा इस पर. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. सो लेट्स डू द अनदर एग्जाम्पल. दैट्स क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक दिस स्क्वायर वाला प्रॉब्लम. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ओके. सो दिस इज स्क्वायर. फाइन. नाउ दिस इज पार्टिकल हियर ऑफ मास q. सॉरी, आई एम इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. सो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर? सो देयर आर 4 पार्टिकल्स. ओके, ऑफ मास m. इसका मास भी है क्या? m. इसका मास है बेटा m. इसका मास है बेटा m. ठीक है ना बेटा. ओके ग्रेट. नाउ देयर आर हाउ मेनी पार्टिकल्स? सो देयर आर ऑब्वियसली 4 पार्टिकल्स A, B, C and D. एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस. कैलकुलेट द फोर्स ऑन द C वाला पार्टिकल. ठीक है ना बेटा. कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल C. ओके. व्हाट इज गिवन टू यू इज दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू A. ठीक है बेटा. तो पहले आपको पता होना चाहिए बेटा ये डिस्टेंस कितना है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल ऑफ द स्क्वायर? ये है A, ये है A, तो ये होगा बेटा √2A. ठीक है ना बेटा. सिंपली यूज पाइथागोरस थ्योरम, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ठीक है ना बेटा. अब बोलो बेटा इस पर कितने फोर्सेस हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन दिस पार्टिकल? कितने फोर्स हैं बेटा? 3 फोर्सेस. एक फोर्स इस दिशा में बेटा F. ठीक है ना बेटा. दूसरा फोर्स इस दिशा में, दैट्स इक्वल टू F. ठीक है बेटा. तीसरा फोर्स इस दिशा में है बेटा, दैट्स इक्वल टू F डैश. व्हाट इज दैट? F डैश. ठीक है बेटा. इसलिए मैंने F डैश लिखा बेटा बिकॉज दिस डिस्टेंस इज नॉट सेम एज दैट ऑफ दिस. ओके. तो यहाँ मैंने क्या लिखा बेटा? F डैश. नाउ F एंड F आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? √2F. तो इस दिशा में और एक फोर्स होगा बेटा, इन दो का रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय F बिकॉज द एंगल इज 90. ठीक है बेटा. अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. सो द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी F एंड दैट्स इक्वल टू व्हाट? फॉर एग्जांपल FC. सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय F प्लस F डैश. ठीक है बेटा. सो √2 multiplied by F. F is the force between this particle and this particle, so it is equal to G multiplied by M into M is M square divided by distance square is A square. ठीक है बेटा. Plus F dash is the force between C and A, so that's again equal to G multiplied by M into M is M square divided by distance है इनके दरमियान √2 multiplied by A square. समझ में आया बेटा. So it will be finally equal to GM square by A square. GM square by A square कॉमन निकलेगा बेटा. GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर. यहाँ क्या बचेगा बेटा? √2. यहाँ 1/2. समझ में आया क्या बेटा? सो दिस द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल C. ओके. सो दिस द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल C. ओके. सो these are some standard examples. ठीक है ना बेटा. ओके. सो विल बी डूइंग वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हियर ऑन दिस वीडियो. ओके. सो दैट्स लाइक दिस. और एक क्वेश्चन देख लो बेटा आप इस पर. यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. सो how many particles? Again we have 3 different particles like this. Like this it is. So this here particle of mass m, this here particle of mass m, this here particle of mass छोटा m. This distance is given. For example, this is x, this is a, this is a. Question आपके पास सीधे सीधे ये है बेटा. Calculate the force on the small m. Calculate the force on the small m. So that means you have to calculate F on small m. What is the value of this? ठीक है ना बेटा. तो क्या करना है बेटा आपको? यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. स्मॉल m पर कितने फोर्सेस होंगे? ऑब्वियसली 2 फोर्सेस. वन बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल M, अनदर बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल M. एक फोर्स इस दिशा में होगा बेटा, दैट्स इक्वल टू F. दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में F. ठीक है बेटा. अट्रैक्टिव इन नेचर. ये वाला एंगल चलिए मान लेते हैं बेटा थीटा. ये वाला एंगल थीटा. F एंड F थीटा थीटा.
तो इस एफ के कितने कंपोनेंट्स होंगे बेटा, 2 कंपोनेंट्स। इस दिशा में एफ कॉस थीटा, इसका इस दिशा में एफ कॉस थीटा, तो आई से निकलेगा बेटा ट्वाइस एफ कॉस थीटा। क्या निकलेगा बेटा, ट्वाइस एफ कॉस थीटा। ठीक है ना बेटा, ओके। सो लेट मी राइट इट हियर, let me write it here. So what will be the net force here, what will be the net force here? So here I will write down the force on the small m. बोलो बेटा कितना आएगा बेटा, that will be equal to twice f multiplied by cos theta, twice f multiplied by cos theta। ठीक है ना बेटा। अब बोलो पहले this is a this is x, तो बोलो बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर PGT। ठीक है बेटा, तो पहले हम यहाँ कॉस्ट लिखेंगे बेटा। बोलो बेटा कॉस्ट किसके बराबर आएगा, दैट्स इक्वल टू बेस डिवाइड बाय hypotenuse, base divided by hypotenuse is equal to what, that's equal to base divided by hypotenuse। ठीक है ना बेटा, that's equal cost है, तो बेस क्या है बेटा यहाँ पर, that's equal x, hypotenuse क्या है बेटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया बेटा। सो लेट्स कैलकुलेट द फोर्स नाउ, ओके। सो लेट्स कैलकुलेट द फोर्स, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। सो फोर्स ऑन द स्मॉल m will be equal to यहाँ 2। ठीक है बेटा, कैपिटल F is the force between capital M and small m, so that will be equal to G into capital M into small m divided by, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है बेटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट है किसके बराबर, एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, दिस स्क्वायर एंड रूट इज गोइंग टू कैंसल, तो यहाँ क्या आंसर आएगा बेटा, ट्वाइस जी कैपिटल एम स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय, this square and root will cancel, so then this is raised power 1, this is raised power 1 by 2। in multiplication base are same, powers are added, तो क्या आएगा बेटा, x square plus a square raised to the power 3 by 2, so this is the net force on the particle of mass small m। ठीक है बेटा, so I am sure आपको अच्छी तरह से ये एग्जाम्पल भी समझ में आई होगी बेटा। so we are done with the part first, that is polygon type, okay, पॉलीगन टाइप। ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट इज दियर सिमेट्री टाइप, तो एक दो एग्जांपल उस पर कर लेते हैं बेटा। सिमेट्री टाइप, यहां ध्यान दीजिए बेटा, सिमेट्री टाइप, सिमेट्री टाइप प्रॉब्लम, सिमेट्री टाइप। ठीक है बेटा, यहां आप ध्यान दीजिए बेटा, सिमेट्री टाइप, हाउ विल डू द सिमेट्री टाइप। सो सिंपली सिमेट्री टाइप इज लाइक दिस, इफ देयर आर n आइडेंटिकल पार्टिकल्स, क्या बोला मैंने, if there are n identical particles placed at the n corners of a regular polygon, that polygon can be equilateral triangle, it can be square, it can be a regular pentagon, it can be hexagon, so on and so forth। ठीक है ना बेटा, if there are n particles placed at n corners of a regular polygon, then the net force on the particle placed at the geometric center of that polygon will be 0। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, या चलिए मान लेते बेटा देयर इज अ स्क्वायर, और फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पेंटागन लाइक दिस। ठीक है बेटा, ओके। सो हियर वी हैव हाउ मेनी पार्टिकल्स, 3 particles, m and m at the 3 corners। here how many particles, 4, m and m। ठीक है बेटा, then how many particles here, 5 particles हैं बेटा यहाँ पर at the 5 corners of a pentagon। ठीक है बेटा, at the center there is a particle, for example small m, at the center there is a small m, at the center there is a small m। ठीक है बेटा, बोलो बेटा इस स्मॉल m पर फोर्स कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा बेटा, 0। वी आर डन विद द सिमेट्री। ठीक है ना बेटा, इसी तरह से आपके पास हेक्सागन है, सो देन देयर इज एट द सेंटर पॉइंट देयर इज अ पार्टिकल हुज मास इज स्मॉल m, उसके उस पर भी कितना फोर्स होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है ना बेटा, वी विल डू एन एग्जांपल हियर। ठीक है ना बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन द सिमेट्री। यहां ध्यान दीजिए बेटा, फॉर एग्जांपल हियर वी हैव ए पेंटागन। क्या चीज है बेटा, पेंटागन, वेरी गुड। दिस हियर कैपिटल M, दिस इज कैपिटल M, दिस इज कैपिटल M, दिस इज कैपिटल M। ठीक है बेटा, यहां पर है बेटा स्मॉल m। क्या है बेटा, स्मॉल m। नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट fm, कैलकुलेट fm, कैलकुलेट fm। ठीक है बेटा, यहां ध्यान दीजिए बेटा, जो फोर्स इस पर होगा ना बेटा, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज देयर आर नॉट 5 पार्टिकल्स इन द 5 कॉर्नर्स। ठीक है बेटा, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, देयर इज अ जुगाड़ वे टू डू इट। दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू, दिस इक्वल टू फॉर एग्जांपल a, कितना बेटा है, डिस्टेंस a। ठीक है ना बेटा, अब इस पर कितना मास है बेटा, 0। सो कैन वी राइट लाइक दिस, इट्स मास इज इक्वल m माइनस m, लिख सकते हैं ना बेटा, m माइनस m। ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान रखना बेटा, what I'm going to explain is this, now the force on small m, because of this capital 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 M will be 0, will be 0। ठीक है ना बेटा, तो so this problem becomes this, it boils down to this problem। यहाँ पर एक पार्टिकल है बेटा स्मॉल m, यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है बेटा माइनस m। ठीक है ना बेटा, बिकॉज द फोर्स ऑन दिस, बिकॉज ऑफ दीज 1 2 3 4 5 इज 0।
Now there's only one particle, that's minus m. ठीक है ना बेटा? Okay, then we know that the force between the two particles, two massive particles, what that is always attractive in nature. Now for example, if we hypothetically take minus m, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स होगा बेटा रिपल्सिव, वो इस दिशा में होगा, दिस इज ए. वो फोर्स कितना होगा, g इंटू प्रोडक्ट कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर. ठीक है ना बेटा? ठीक है ना बेटा? ओके. तो इसी तरह से आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा. फॉर एग्जांपल देयर इज अ 100 साइडेड पॉलीगन. क्या चीज है बेटा? 100 साइडेड रेगुलर पॉलीगन. तो इसके कितने कॉर्नर्स होंगे बेटा? ऑब्वियसली 100 कॉर्नर्स होंगे. तो हर एक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल है. तो सेंटर पे एक पार्टिकल है, उस पर कितना फोर्स होगा बेटा? ऑब्वियसली जीरो होगा. ठीक है ना बेटा? जीरो होगा. नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस. नाउ इफ फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज लाइक दिस, you can stop. ठीक है ना बेटा? ओके. सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉलीगन. ठीक है बेटा? आपके पास एक पॉलीगन है बेटा. देयर इज 100 साइडेड पॉलीगन. तो इसके कितने कॉर्नर्स होंगे बेटा? ऑब्वियसली 100 कॉर्नर्स. सो बट इट इज गिवन दैट देयर आर 99 पार्टिकल्स एट द 99 कॉर्नर्स ऑफ अ 100 साइडेड पॉलीगन. ठीक है बेटा? देन एट द सेंटर देयर इज अनदर पार्टिकल. उस पर कितना फोर्स होगा बेटा? सीधे आपको लिखना क्या है बेटा? फोर्स विल बी एफ, सॉरी डियर, फोर्स विल बी इक्वल टू एफ. वो किसके बराबर आएगा बेटा? g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर. फॉर एग्जांपल दैट इज a, तो a स्क्वायर बस हो गया. दैट्स इट. ठीक है ना बेटा? आपको करना कुछ नहीं है बेटा. ठीक है ना बेटा? ओके. सो नेक्स्ट अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा. सो लेट्स स्विच टू अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल्स एंड व्हाट इज दैट. सो वी आर डन विद द पॉलीगन टाइप, देन वी आर डन विद द सिमेट्री टाइप. ठीक है ना बेटा? ओके. नेक्स्ट जो आपके पास है बेटा वो है बेटा इक्विलिब्रियम टाइप. क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स. ओके, इक्विलिब्रियम. सो लेट्स डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑन दैट एज वेल. इक्विलिब्रियम. तो पहले आप मुझे बेटा ये बोलिए कि हैं क्या ये इक्विलिब्रियम. व्हाट वी मीन बाय इक्विलिब्रियम? Equilibrium simply means that when the net force is equal to zero, if there is a particle, net force on this particle is equal to zero, then the particle is said to be equilibrium. ठीक है ना बेटा? तो सीधे सीधे इस पर एक क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सो फॉर एग्जांपल दीज आर टू पार्टिकल्स. इसका मास है बेटा m1, this is another particle whose mass is equal to m2. the separation between these two particles is given to you, that's equal to r. ठीक है बेटा? So the question is like this. Where should a third particle be placed so that the force on that particle is equal to zero? ठीक है बेटा? तो हमारे पास एक पार्टिकल है बेटा. So that's third particle. So for example that is placed somewhere here. बोलो बेटा इस पार्टिकल पर कितने फोर्सेस होंगे? एक फोर्स इस दिशा में होगा बेटा F1, दूसरा फोर्स इस दिशा में होगा बेटा F2. So this distance is r1, this distance is r2. ठीक है ना बेटा? So obviously f1 and f2 can be equal and opposite and hence they will cancel and hence the net force equal to zero. निकालना क्या है बेटा? आपको locate करना है बेटा point of equilibrium. That means you have to calculate the value of r1 and you have to calculate the value of r2. सीधे सीधे आप याद रखो बेटा ये equation, r1 equal to root of m1 divided by root of m1 plus root of m2 multiplied by r. ठीक है ना बेटा? this will give r1. ठीक है बेटा? this equation will give r1. then r2 you want to calculate, that will be equal to root of m2 divided by root of m1. ठीक है बेटा? plus root of m2 multiplied by the net distance, that's equal to r. ठीक है बेटा? और एक पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, that is r1 plus r2 will be equal to r. ठीक है बेटा? there will exist only one point of equilibrium. the point of equilibrium will it will lie somewhere in between the m1 and m2 and closer to the smaller mass, and the value of r1 is given by this equation, value of r2 is given by this equation. ठीक है ना बेटा? चलिए बेटा एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं बेटा. we'll do just one question. so for example there are two particles. कितने पार्टिकल्स है बेटा? दो. ये पार्टिकल है बेटा 16 किलोग्राम, ये पार्टिकल है बेटा फॉर एग्जांपल 9 किलोग्राम. ये डिस्टेंस आपके पास दी गई है बेटा. फॉर एग्जांपल इट इज गिवन, इट्स इक्वल टू 14 मीटर्स. कितना डिस्टेंस है बेटा? 14 मीटर. सो आपको करना क्या है बेटा? यू हैव टू लोकेट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स दैट the point where the gravitational field is equal to zero, or the point where the gravitational force on a particle is equal to zero. So that is somewhere here. ठीक है ना बेटा? So this is small m. Okay. So for example ये मान लेते बेटा particle number 1, ये मान लेते बेटा particle number 2. So that means this is r1 and this is r2. So we have to calculate what? The value of r1 and r2. r1 comma r2 is equal to what? We have to calculate that. Let's first of all calculate the value of r1. यहाँ आप ध्यान रखिए बेटा. So r1 will be कितना? root of m1 divided by root m1 plus root m2. ठीक है बेटा? multiplied by net separation, that's equal to r. so root m1, तो इसका रूट क्या आएगा बेटा? root 16, that's equal to 4.
root of m1 root 16 is 4 plus root m2 that's root of 9 that's equal to 3 multiplied by 14. ठीक है बेटा. So this is 4 plus 3 is 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 4s are 8. तो ये आएगा बेटा 8 मीटर्स आपके पास. ठीक है ना बेटा. क्या आया बेटा R1 8 मीटर्स. ठीक है बेटा. तो अगर ये 8 मीटर्स हैं, ये टोटल है 14, तो ऑब्वियसली R2 कितना होगा. R2 विल बी इक्वल टू कितना होगा बेटा 14 माइनस 8. 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 मीटर्स. ठीक है ना बेटा. तो बस हो गया. ठीक है बेटा. सो इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इजीली, आई एम श्योर यू कैन डू इट इजीली. ठीक है ना बेटा. सो वी आर डन विद व्हाट वी आर डन विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी आर डन विद द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है ना बेटा. सो एनफ फॉर टुडे. ठीक है बेटा. एनफ फॉर टुडे. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बेटा दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड देन विल बी डूइंग द PYQs दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है बेटा. बिफोर दैट विल बी डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.